Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, that is meaning and fundamentals of double entry bookkeeping. I hope you remember I have given you one example at the start of our academic year. That was the video on how double entry system came into existence. I have given you one instance. Okay, जो double entry system of bookkeeping किसने start किया था? It was started by Luca di Bargo PCOLI. Okay, he started the double entry system of accounting. After whom? After कौतल्या. Okay, कौतल्या जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्थशास्त्र करके एक बुक था, वहाँ पे उन्होंने थोड़े रेफरेंसेस दिए कि अकाउंटिंग कैसे मेंटेन किए जाते थे. लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड. ओके, so all over the world it was only double entry system of accounting which is accepted. Okay, because and who invented this? Luca di Bargo Pisioli. So before I start, let me introduce what is there in this chapter. So in this chapter you are going to learn what is meaning, definition of double entry bookkeeping system, methods of recording information, accounting information, that is Indian, single and double, advantages of double entry bookkeeping, classification of accounts, golden rules of debit and credit, that is traditional approach, modern approach of rules of accounting, and illustrations. Okay, so from this chapter you all are going to start with the problems. Okay, now problems, now only the first chapter was a theory chapter, remaining all the chapters are having problems. So you should be very अटेंटिव वाइल लर्निंग द प्रॉब्लम्स. ओके, अगर एक बार जो 11th में आप पढ़ोगे वो आपको हर ईयर यूज़ होगा. सो 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर यू ऑल. ओके, so let me start with the first, that is meaning and definition of double entry bookkeeping. Okay, now here this method is most scientific method, okay, of recording all monetary transactions in the books of accounts. Okay, so under this system, here ये system कहाँ से आया? It was originated from the Italian merchant, that is Luca di Bargo Pisioli, on 10th November 1494. And this day, that is 10th November of every year, is celebrated as International Accounting Day, because on this day, that is 10th November 1494, he has brought into existence double entry system of accounting. Now double entry system मतलब क्या है? Now under this system of bookkeeping, whatever transactions that are taking place in the business will have two aspects. Okay, whatever business transactions that takes place will have two effects. Okay, so that is, here two accounts will be involved, or two parties or two persons will be involved, that is the receiver of the benefit and the giver of the benefit. Okay, so here if something comes inside the business or something going out of the business, or if it is a revenue or if it is a loss, okay, so all these things will have a two aspects, that is debit, that is known as DR, and credit, that is CR. That's why it is known as double entry system of accounting. Okay, now according to this, okay, double entry system of accounting, whatever transactions are there, it is concerned with assets, liabilities, capital, expenses and income. Okay, so whenever there is increase in the assets and expenses, it is debited, and wherever there is decrease in the liabilities and expenses, decrease in the assets and expenses, it is recorded as credit. Okay, so here methods of recording accounting information. So there are two methods of recording accounting information. One is Indian system, second one is English system. Now this English system is further classified into single entry system and double entry system, but nowadays only double entry system of accounting is accepted. Now we'll see Indian system.
इंडिया में कैसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ना. इंडियन सिस्टम इज व्हाट इट इज रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन योर ओन लैंग्वेज, दैट इज इट कैन बी इन एनी इंडियन लैंग्वेज, कैन बी इन मराठी, उर्दू, हिंदी, गुजराती, तमिल, kannada. So whatever language you all speak, the businessman speak, he will maintain the record in his own language. Okay, this is also known as Mahajani Deshinama system. Okay, so here according to the vernacular language, that is your Indian language, that accounts will be maintained. So it is recorded in the long book which is known as Bahi Khata, okay, or Kid. Okay, so here ये जो रिकॉर्ड है एक बड़ा सा लंबा सा बुक होगा. आई हैव शोड यू दिस बुक इन योर वन वीडियो. ओके, दैट वाज अ वेरी लॉन्ग रेड कलर बुक. उसमें वो लोग रिकॉर्ड सारे मेंटेन करते हैं. ना दिस सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट साइंटिफिक. ओके, बिकॉज इफ़ यू वांट टू ट्रेड आउटसाइड, इफ़ यू वांट टू शो योर अकाउंट्स टू द आउटसाइडर्स which is apart from your business, then you should maintain double entry, you should maintain it systematically. So this Indian system is not a systematic method, and this system is still used by small organization. जो छोटे छोटे organization है, they will maintain under the Indian system of accounting. Okay, but others, big business, they will maintain only double entry system of accounting. Next is English system. In this there are two, that is single entry system and double entry system. Now single entry system में क्या होता है, here only cash account and personal accounts are recorded. Okay, this is also a unscientific method of recording because it is incomplete. Other records are not maintained. only जब कैश आता है या कैश आता है और जिससे हमें कैश मिलता है और जिसको हमें पे करना है उसका ही नाम, जैसे कि पर्सनल अकाउंट and cash account will be maintained, other accounts won't be maintained. That's why it is inaccurate method of recording business transactions. Okay, so this ये जो transaction है, ये जो recording है, will not provide you with the accurate information. Whatever information is there, it is not accurate if you maintain according to the single entry system. Next is double entry system. Under English method, the second method is double entry system. Now this double entry system of accounting is the most scientific method of recording all business transactions. Okay, जो भी record करते हैं, it is the most scientific because here twofold effect is given to the every transaction whatever recorded, that is one account will be debited and second account will be credited with the same equal amount. That's why it is known as the most scientific method of recording transaction. Okay, next is important element of double entry system of bookkeeping. Okay, that is preparation. It will help you in dual effect of the, it will give the dual effect of the transaction. It will help in recording the transactions in the journal. It will post the entries to the ledger. It is balancing of the ledgering account, preparation of the trial balance, and the last step is preparation of final account. Okay, तो यहाँ पे ड्यूअल इफेक्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इफ़ यू डोंट गिव ड्यूअल इफेक्ट देन यू विल नॉट रीच टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट. ओके, सो दिस इज़ द साइकिल. फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ड्यूअल इफेक्ट देते हैं. कोई भी ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन अकर करते हैं उसको हम लोग फर्स्ट विल गिव द ड्यूअल इफेक्ट. ओके, दैट इज डबल इफेक्ट विल गिव. देन दैट दोज record whatever effect we are giving, that will be recorded in the journal. ओके, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा. और जो भी जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा उसको हम लोग कहाँ पे पोस्ट करेंगे, वी विल पोस्ट इट टू द लेजर. उसके बाद इट विल गो टू द बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट. देन after the ledger accounts are balanced, then it will go to the preparation of the trial balance. Okay, trial balance prepare किया जाएगा. उसके बाद लास्ट आता है preparation of the final account. This is the cycle of how final account is prepared. So let's see what is the definition which is given by Batley Boy, that is J.R. Batley Boy. Okay, he is the person who has given the definition. He was a friend of Luca di Bargo Pisioli. उसका friend था J.R. Batley Boy. Okay, he has given this thing definition of double entry system, that is every business transaction has
twofold effect, okay, and that it affects two transactions in opposite directions, okay. And if a complete record to be maintained of each such transaction would be necessary to debit one account and credit one account. It is recording twofold effect of every transaction that has given rise to the term double entry, okay. So double entry system is very important because it will give you twofold effect. Principles of double entry bookkeeping. Now what are the principles? They say that every transaction must have minimum two effect, that is debit and credit. Now two accounts means the receiver of the benefit and other is the giver of the benefit, okay. If one is debited, then other account should be credited, otherwise it is not correct, okay. Now you will understand when you solve problem, whatever I am telling you, you will understand it very clearly when you do it practically, okay. Every debit has equal and corresponding credit of same amount, okay. So these are the principles of double entry system of accounting. So let's see what are the advantages of double entry system of accounting. So here double entry system of accounting, first one is it is very complete record, okay. As I told you, it is a systematic, that's why it will give you all complete records. So under this system business transactions are recorded. This method is very scientific and records both the aspects of the each transaction, okay. जो भी transaction आप लोग record करेंगे उसका पूरा detail में they will give, because every transaction have debit and a credit. Next one is accuracy. जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अंडर द सिस्टम ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज रिकॉर्डेड अरिथमेटिकली एक्यूरेट, ओके. जो भी रिकॉर्ड करते हैं इट इज़ अरिथमेटिकली एक्यूरेट, दैट्स वाई वट एवर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, ओके, इट विल गिव यू कंप्लीट एक्यूरेसी इन योर अकाउंटिंग वर्क. Next is business result. Now when you maintain double entry system of accounting, all the expenses, losses, income, gains, liabilities, assets, debtors, creditors in all these transactions are recorded. This will help you to find the exact result कि हमारे creditors कितने हैं, हमारे expenses कितने आए, हमारा income कितना है, हमारे loss कितना हुआ. So for a particular accounting year this information is very important to take further decision. That's why a double entry system of accounting is very proper method of maintaining accounts. Next is common acceptance. Now this system of accounting is accepted by the universe, that is it is universally accepted accounting principle. Double entry system is accepted by the government institutions, financial institutions, authorities, okay, banks, etc. So this system is accepted all over the world. So what are the advantage? It gives complete record, it is very accurate, it will help in business results, it is commonly accepted all over the world, okay. Next is conventional accounting system, that is the traditional way of maintaining account. So here conventional accounting system is what it is based on practicability, okay. जो भी rules regulations है, it is common, here there is a agreement, okay, which uses the accounting principle, okay. Here information जो भी है rules are there which is between the concepts and the convention. So Indian system of accounting is the best example of convention accounting. So this system does not follow the double entry system of accounting. That's why it is very incomplete way of maintaining record. Now the next and the very important part is classification of account. Now when you are a commerce student you should know the classification of account. ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे आप लोग प्रॉब्लम्स नहीं कर सकोगे. सो अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. Now an account, okay, what is an account, okay. हम लोगों को पता है अकाउंट मतलब सिर्फ बैंक का अकाउंट और कोई अकाउंट नहीं रहता, नहीं तो अपना इंस्टा अकाउंट, एफबी अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट इतना ही पता रहता है. सो इन द सेम वे अकाउंट इज अकाउंट, देयर आर मेनी एन नंबर ऑफ अकाउंट्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस ऑल्सो. जैसे आप लोगों के पर्सनल अकाउंट्स है, जैसे कि बैंक का अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट है, एफबी अकाउंट है, इंस्टा अकाउंट है, वैसे ही
बिजनेस में बहुत सारे अकाउंट्स रहते हैं. ओके, सो हियर यू कैन क्लासीफाई दिस अकाउंट. ओनली व्हेन you are able to classify the accounts, you will be able to do the problems. Okay, so here these accounts are what? It is a summarized record of transactions relating to a particular person, assets, liabilities, particular head of the expense, income recorded at one place. Okay. Now, when you talk about the business, there are large number of activities, there are large number of transactions that takes place in the business. So, when there are large number of transactions, many accounts will be affected. Okay. So here there are three types of main account. Okay, so let's see the definition of account that is given by J.R. Bartleby. An account is a summarized record of transaction, okay, affecting one person, one kind of property, or one class of gain or loss. Okay. Next is given by Carter. An account is a ledger record or in a summarized form of all the transactions that have taken place with a particular person or a thing for a specified time. Okay, so things specified. So here this account, they are classified into three types. Okay, first classification is what? Only two, that is personal account and impersonal account. पर्सनल मतलब जैसे मेरे, आपके, आपके पापा के, आपके मम्मा के. ओके, सो दोज आर ऑल पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू वन पर्सन. ओके, पर्सन को जब रिलेट करता है तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट. नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट. दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट. नेचुरल मतलब विच इज अ ह्यूमन बॉडी. ओके, नेचुरल पर्सन, जैसे कि माई अकाउंट, प्रियंका's अकाउंट, देन योर्स, आपका खुद का अकाउंट, राहुल अकाउंट, देन यू हैव श्रद्धा अकाउंट, यू हैव व्हाट यू कॉल्ड आपके फ्रेंड्स का अकाउंट, मम्मी पापा का अकाउंट. दोज आर ऑल पर्सनल अकाउंट. दे आर क्रिएटेड बाय द गॉड, सो दैट्स वाई दिट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल मतलब दे आर क्रिएटेड बाय लॉ. ओके, पर्सन इज क्रिएटेड बाय लॉ. For example, Pune Municipal Corporation, that is also a personal account. Then you have Radhika Sports Club, that is also a personal account. All the banks account, that is State Bank of India, Bank of Maharashtra, but then you have Bank of Baroda, HDFC Bank. These all are also personal account, but it will come under the classification of artificial personal account. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ओके, रिप्रेजेंटेटिव मतलब दे आर रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट. दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अगर किसी पर्सन को हम लोगों को पैसा देना है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम अकर्ड, okay, outstanding income. Okay, so these are all coming under representative personal account. Okay, so I hope you all have understood what is personal account. It is related to a person or a artificial person or a representative personal account. Okay, next is impersonal account. मतलब they are not personal account but they are a account. Okay, so under impersonal account you have real account and nominal account. So real account are what? Which are existing in business. Okay, so there are two types, that is tangible real asset and intangible real asset. tangible मतलब जो आप लोग टच कर सकते हो, उसको फील कर सकते हैं, यू कैन सी इट विथ योर आईज. ओके, सो दोज आर tangible asset. जैसे कि कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर है, ओके, दोज आर असेट्स. ओके, कंप्यूटर अगर है देन यू कैन सी, यू कैन फील. कैश, मशीनरी, देन इक्विपमेंट्स. ओके, दीज आर ऑल व्हाट? टेंजिबल असेट्स. नॉन टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब यू कैन नॉट टच, you cannot feel, you cannot see, but they are the real accounts of the business. Okay, जैसे कि गुडविल हम लोग देख नहीं सकते बट इट हैज़ अ मॉनेटरी वैल्यू. पेटेंट, उसको हम लोग देख नहीं सकते. कॉपीराइट हम लोग देख नहीं सकते बट दे आर इन द बिजनेस. ओके, next is nominal account. Nominal account are divided into two, that is expenses and losses, incomes and gains.
कंपनी और बिजनेस में एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं? स्टेशनरी लाए हो तो वो एक्सपेंस है, परचेज किया वो एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, रेंट पे किया, टेलीफोन बिल पे किया, मोबाइल बिल पे किया, तो वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट अंडर द हेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनकम एंड गेन, जैसे कि हमें डिस्काउंट मिला, हम लोगों ने सेल्स किया, इंटरेस्ट मिला हमें, हमें अगर किसी का अगर रेंट मिल गया, okay, so those are all incomes and gains. Okay, so here first one is personal account. Now this account represent a person, group of person with whom business deals. Okay, these accounts are classified into three, that is natural person account, this is a individual human being, for example Rajesh account, Sumit's account, Sushma account, Vaibhav account. Okay, so these are what? Natural personal account. Next is artificial person account. So these are created by the law. Okay, any organization, association, जैसे कि cricket association, Bank of Maharashtra, recreation club, ABC and company, these are created by law. Business जो created by law also a personal account, but artificial personal account. Next is representative personal account. So this account represent a certain person or a group of person, okay, which are related to the business. Okay, for example prepaid wages, अगर employees है which are linked to the business, तो उनके prepaid wages एडवांस लिया हुआ होगा, salary, okay, income received in advance, outstanding rent, so these all will come under personal representative personal account. Next is impersonal account. Now this impersonal account are classified into following two categories, that is real account and nominal account. Real account are what? Those are the assets and properties which are owned by the business. Okay, so those are tangible real assets. Tangible real assets which you can see, you can touch and you can feel, जैसे कि मशीनरी, मोटर कार, स्टॉक, गुड्स. Okay, so these are what? Tangible real assets. Non-tangible real assets or intangible real assets are what? Which you cannot see, which you cannot feel, which you cannot touch, but they have some monetary value, जैसे कि goodwill हो, patent हो, trademark हो, copyright हो. Okay, next is nominal account. Now this account, okay, is expressed in terms of expenses, losses, incomes and gains. Okay, जैसे कि wages हो, stationery हो, या salary हो, depreciation हो, commission हो, discount received हो, these all will come under nominal account. Okay, so these are the three types of account, that is personal account, real account and nominal account. आपको तीन account बहुत अच्छे से जानने हैं. Okay, next is debit and credit. Now डेबिट इज ऑल्सो नोन एज DR. ओके, डेबिट को हम लोग कैसे लिखते हैं? कैपिटल D एंड स्मॉल r. इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंटिंग व्हाट यू कॉल, वेट, लेट मी टेल यू हाउ इट इज. सपोज दिस इज योर अकाउंट. ओके, ये जो अकाउंट है, सपोज दिस इज योर वन अकाउंट. सो आप लोगों का डेबिट साइड इधर है एंड क्रेडिट साइड इज हियर. सो इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज योर डेबिट साइड एंड योर राइट हैंड साइड इज योर क्रेडिट साइड. सो डेबिट DR, क्रेडिट CR. ओके, ऐसे करके आप लोगों को लिखना है. सो दिस इज ऑल योर डेबिट साइड एंड दिस इज ऑल योर क्रेडिट साइड. सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. ओके, हमारा जो अकाउंट है इट इज डिवाइडेड इनटू टू, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट. सो दिस मच यू शुड नो. So here debit is on the left hand side of the account and your credit is on the right hand side of the account. Okay, sorry for this. Okay, this is not getting rub. Okay, because of this virtual session I am supposed to do it on this. If it was on board it would be very easy. Hope to see you all soon. Okay, so next, oh, it got cancelled. Next is golden rule of debit and credit.
ओके हर एक के लिए देयर विल बी डेबिट एंड देयर विल बी क्रेडिट. कौन सा भी अकाउंट रहने हो देयर विल बी वन डेबिट एंड देयर विल बी वन क्रेडिट. सो दिस गोल्डन रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बोला ना व्हेन यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट यू शुड नो द 3 अकाउंट्स एंड देयर रूल्स. ओके सो फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट. सो योर पर्सन इज व्हाट it is a person or a individual being. Okay so here there will be debit the receiver and credit the giver. क्योंकि यहाँ पे रिसीवर और गिवर होगा पर्सन्स रहेंगे. पर्सन्स मतलब इट विल बी पर्सन हु विल रिसीव एंड पर्सन हु विल गिव. सो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. Next is real account. Real account or what it is related to the things or assets which are there in the business. थिंग्स से रिलेट करता है. तो बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें आती चीज़ों के रिलेट करता है. सो बहुत सारी चीज़ें आती है और बहुत सारी चीज़ें बिजनेस से बाहर जाती है. सो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. Okay next is nominal account. So nominal account is related to the expenses and losses, incomes and gains. So you will debit all the expenses and losses and you will credit all the incomes and gains. So rule क्या है हमारा debit the receiver personal account, debit the receiver, credit the giver. Okay then real account debit what comes in, credit what goes out. Nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Okay तो ये हो गए आपके 3 golden rules. Okay of the 3 account that is personal account, real account and nominal account. Okay ये बहुत important है. Okay now we'll see one small this thing what you call one example, that is from the following find out 2 aspects, 2 accounts and classify the account. Okay so here commence business with cash rupees 20,000. ओके कमेंस बिजनेस मतलब कैश से हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया. वी हैव स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैश. तो कौन देता है कैश बिजनेस को? ओनर देता है राइट. ही इज ऑल्सो नोन एज द प्रोप्राइटर. सो फर्स्ट एक्सपेक्ट इज व्हाट कैश इज कमिंग इन. ओके कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है और कौन दे रहा है हमें? प्रोप्राइटर इज गिविंग द कैश. सेकेंड वन इज व्हाट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विजय. क्रेडिट मतलब उधारी पे लिया है. सो परचेज इज व्हाट इट इज अ एक्सपेंडिचर. ओके एंड हु इज गिविंग यू? अजय इज गिविंग द गुड्स. सो अजय इज द गिवर. नाउ व्हेन यू आर डूइंग दिस अकाउंट्स यू शुड बी द अकाउंटेंट ऑफ दैट बिजनेस. अदरवाइज द होल प्रॉब्लम विल गो रॉन्ग. यू शुड नॉट बी द ओनर. यू शुड नॉट बी द अदर पर्सन. व्हेन अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हो जो भी अकाउंट्स करोगे यू शुड थिंक दैट यू आर अ अकाउंटेंट ऑफ अ बिजनेस. तभी आपके प्रॉब्लम्स करेक्ट आएंगे. इफ़ यू थिंक दैट यू आर द ओनर प्रॉब्लम पूरा रॉन्ग होगा. तो when you are solving problem you should be the accountant of the problem. Okay then देखो अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी वाई यू शुड बी द अकाउंटेंट. कमेंस बिजनेस विथ कैश. ओके तो आप लोग अगर अकाउंटेंट है तो आप लोग क्या बोलोगे कि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है और ओनर जो है हमें पैसे दे रहा है. अगर आप वही जो अकाउंटेंट है उस जगह पे आप लोग अगर ओनर होते तो ओनर क्या बोलते हैं मेरे खाते से कैश जा रहा है बिजनेस में और मैं क्या कर रहा हूँ बिजनेस को पैसे दे रहा हूँ. तो दिस इज completely wrong. The account will go wrong. So you should be the accountant of the business. Next is purchase goods on credit from Ajay. Okay so purchase, when you purchase it is a expenditure. Okay and who is giving you the goods? Ajay is the giver. Next cash sales. So when it is cash sales goods are going out of the business. Okay sales is what it is a income, but what is coming in? कैश इज कमिंग इन द बिजनेस बिकॉज व्हेन यू डू सेल्स कैश ऑब्वियसली अपने बिजनेस में आएगा. सो कैश इज कमिंग इन, सेल्स इज द इनकम. नेक्स्ट रिसीव्ड कमीशन. आप लोगों को अगर कमीशन मिला सो कमीशन क्या हो गया? आपके लिए प्रॉफिट हो गया. और क्या आ रहा है हम आपके साथ? क्या कमीशन के साथ आपके बिजनेस में कैश आ रहा है. सो कैश इज कमिंग इन एंड कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम. नेक्स्ट इज
पेड रेंट। सो अगर आप लोग रेंट पे कर रहे हो तो कैश आपका क्या होगा, बाहर जाएगा, और रेंट क्या है, इट इज़ एन एक्सपेंस। सो रेंट इज़ एन एक्सपेंस एंड कैश इज गोइंग आउट। नेक्स्ट वी विल सी टू एक्सपेक्ट्स एंड टू अकाउंट्स। ओके, सो हियर टू एक्सपेक्ट्स कौन से हैं हमारे, cash is coming in, cash is coming in, proprietor is the giver, business proprietor is the giver. So यहाँ पे दो अकाउंट्स कौन से आए, कैश कमिंग इन मतलब कैश अकाउंट, एंड proprietor when proprietor gives the business money to the business it is a capital account. Okay, so ये हो गए टू अकाउंट, that is कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट इज purchase is an expense. Okay, purchase is an expenditure, Ajay is the giver. So purchase is an expense, so यहाँ पे अकाउंट कौन सा हुआ, purchase account, and Ajay is the giver, so Ajay account. Okay, next cash comes in, so cash comes in, sales is an income, sales is an income. So two account कौन से हो गए, cash account and sales account. ओके, सो एज आई टोल्ड यू व्हेन देयर आर टू अकाउंट्स, दो अकाउंट रहेंगे और हर एक ट्रांजेक्शन के लिए देयर विल बी वन क्रेडिट एंड देयर विल बी वन डेबिट. ओके, ये याद रखना. नेक्स्ट इज कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, कमीशन रिसीव्ड इन इज एन इनकम. सो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से हैं, कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट. Okay, next is what, rent is an expense, cash goes out. Okay, so rent is an expense, that is why rent account, cash goes out, so cash account. So इतने सारे accounts हैं हमारे. Okay, so till today let it इतना ही रहने दो. उसके बाद next इसमें हम लोग क्या करेंगे, we will classify the accounts. So before that if you have any doubt please let me know. Tomorrow again I will revise this problem.